So we have been studying Schrodinger equation, इसका radial solution या whatever in the sense solution of Schrodinger equation in r, theta and phi coordinates. Now in today's class we are going to see its concrete realization. Concrete realization in the sense कि हम we are going to see how you know something about principal quantum number, पता है ना? In your 11th 12th class you might have studied principal quantum number, azimuthal quantum number and other quantum numbers, so on and so forth. Now what we are going to see is how we can quantization of energy. So we have in the previous class we have found how we can find E जो है जो first है ना 1 by how we can found those that 13.6 electron moved by n square है ना. So no. So derive the same expression from a particular solution of Schrodinger's equation. Now, in this context, what we are going to see, how we are going to see orbital quantum number. So, quantum number. So, since जो हमारे पास solution of Schrodinger equation था, वो हमारे पास L into L plus 1. So, we took basically angular momentum part. L and L square, है ना? उसके eigenvalues, eigenstates, है ना? So they were basically something having rotational motion, angular momentum operating. Saying that we saw Schrodinger equation for hydrogenic potentials or for spherical symmetry last. हाँ, spherical symmetric potential, but they had a solution of L square. The eigenstates and eigenvalues, where basically we are solving it for L square operators. Okay, so taking that thing into consideration, we'll concentrate on something called, since we know in your early classes, we have so-called quantum number, azimuthal quantum number, spin quantum number. So that orbital quantum number may be more relevant to how we can solve those L square states. Okay, that's the point. So if we want to take, if I'll just write the differential equation in this form, 1 by r square d by dr, r square dr by r, so plus 2m by x square. So here, वहाँ पर हमने 1 by r, e minus v और e by. So here what we are going to see इसका एक particular potential का form है ऐसी थी. We don't normally हम वैसे नहीं लिखते थे, हम सिर्फ लिखते थे e minus 1 by r या e plus 1 by r. हाँ, so वो हाँ little कम. तो हाँ कम. And these are the solutions. L into L plus 1 divided by r square into r is equal to 0. So you can say the solution जो था, it's basically an electron is moving along a nucleus. For example, one electron system, proton and hydrogen atom, simplest case. Yeah, this is a hypergeometric equation, so obviously you utilize that. नहीं, वो लिए कि उनके solutions हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? जो Schrodinger of solution of Schrodinger equation है ना, ultimately हम which series we use, whether we use linear polynomial, whether we use basic polynomial, so these are different ways, and how those polynomials are related, that's not the point. Here we are concentrating only on the radial part of the thing, the orbital angular momentum part of it. And in the its simplest solution in terms of the way we visualize hydrogen का solution. So हम वो यहाँ तक कैसे आए, you leave away that. We are going to discuss this equation now. ठीक है? How we arrived at it, that was the part of solution of how we can arrive at the solution of hydrogen atom. Solving a particular differential equation r theta phi जो भी है हमारे पास. तो
अब ये हमारे पास ये है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स मोशन इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियर, हाउएवर द ई है ना, ई इज द total energy of which includes kinetic as well as potential energy of the thing. अब असल मसला आता है यहाँ एक जो हमारे पास काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है ना, थोड़ा सा कंट्रडिक्शन आ रहा है. सो इट मीन्स दैट इट हैज नथिंग टू डू विद द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एज सच. ठीक है, तो सिंस इट्स वी आर ट्राइंग टू हैव एन ऑर्बिटल, इसका ही है. तो इसमें थोड़ा सा ये हाउ कैन जो हमारे पास ये कंट्रडिक्शन आ रहा है, हाउ कैन रिमूव इट. वी कैन रिमूव इट बाय द फॉलोइंग आर्गुमेंट. आर्गुमेंट इज दैट काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. वन हो गया ड्यू टू मोशन टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. दिस इज काइनेटिक एनर्जी रेडियल. या ये हो गया टूवर्ड्स द न्यूक्लियस और बोथ कंपोनेंट्स. जिस तरह आप करते हैं ना मैंने स्टडी एंगुलर मोमेंटम, उसका और साइन थीटा और कॉस थीटा फिर निकालते हैं. योर जो क्लिपनो की बुक है, कैन सी दैट एक्सरसाइज आउट देयर. तो इनके से के रेडियल हम ऐसे लेंगे, इस तरह के ऑर्बिटल हम लेंगे. इट इज ड्यू टू मोशन अराउंड न्यूक्लियस. ठीक है, यू कैन टेक के रेडियल एंड के ऑर्बिटल. काइनेटिक एनर्जी का हमने दो पार्ट में डील किया. जो रेडियल है इट्स मोशन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, और के ऑर्बिटल इज ड्यू टू मोशन अराउंड द न्यूक्लियस. सो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द इक्वेशन सम कंक्रीट फॉर्म केस में. तो अब जो है टोटल एनर्जी हमारे पास है एनर्जी, इट विल बी काइनेटिक. इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे बराबर किसके बराबर, यू रखेंगे माइनस ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ठीक है, सो दिस इज इट. नाउ जो हमारे पास टोटल एनर्जी है, इट्स काइनेटिक एनर्जी रेडियल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिटल प्लस पोटेंशियल एनर्जी. एक हमारे पास ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, दैट these three will gives the total energy of this thing. So you can have this thing, or you can have kinetic energy radial plus kinetic energy potential or orbital plus minus E by 4 pi epsilon naught r. ठीक है, हाँ यस यस यस. अब इसको हम अपने इसमें जस्ट ट्राई टू सबस्टिट्यूट इट हियर इन दिस सिचुएशन. ठीक है, अपने वाली इक्वेशन. ठीक है, सो ओनली थिंग इज दैट जो एनर्जी की वैल्यूज हैं, यू कैन हैव दीज 1 2 एंड 3 वैल्यूज. सो द इक्वेशन विल टेक दिस फॉर्म. हमारे पास जो आएगा इट विल टेक दिस फॉर्म r square dr by dr plus 2m by h square kinetic energy radial plus kinetic energy orbital minus e by 4 pi epsilon naught r. और हमारा ये अपना these are the solutions if you remember. these are the solutions of L into L square या L square. तो उसके जो आइगन वैल्यूज आती हैं, we denoted them by this. ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना? हाँ यस यस यस. हाँ, सो अब ये है कि
we are going to say that the last two terms uh, in the square brackets, ये जो है last two terms, they will cancel. This means that we assume that, yeah, if हम ऐसे कहेंगे, if the last two terms cancel, then kinetic energy orbital, so this should be equivalent to this. So if अगर ये दो कैंसिल करेंगे तो this should be equivalent to this, then it will be 0. ठीक है? So why you are assuming that they should cancel? You just wait for some. Sorry, we said this k orbital. चलो ये इसको पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे रखो, पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे रखेंगे. This k orbital and this should cancel. So then it's equivalent to h square L into L plus 1 by 2m r square. अब इसमें इसने थोड़ा सा ये किया है, we have somehow dividing both sides with 2m, so you can write it here 2m. तो ये m यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो you can have this equation this form. तो अब अगर ये है, if you assume that k orbital is equal to this, then since काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? बराबर 1/2 mv², मगर किसका? ऑर्बिटल का, mv ऑर्बिटल स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू, एंड एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है? L इज इक्वल टू बराबर mvr, है ना? तो v विल बी ऑर्बिटल दिस, और वो में राइट काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिटल जो होगी, सो अगर इसको इन टर्म्स ऑफ एल लिखेंगे, ये है ना mv ऑर्बिटल, आप इसको l स्क्वायर करोगे, ये आएगा m स्क्वायर v ऑर्बिटल स्क्वायर r स्क्वायर, है ना? तो m स्क्वायर एक एक्स्ट्रा आएगा, वो डिनोमिनेटर में आएगा, विल कैंसिल इट, इट विल बी l स्क्वायर बाय 2m r स्क्वायर. So we can also write from this and this, we can also write kinetic energy orbital can be put like this. ठीक है? So by doing this substitution, we can say L square, we can say L square by 2m square r square is equal to h square, ये हमारे पास is equal to L into L plus 1 by 2m r square. Where देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो L will be equal to, इसका h का ये रूट आएगा, h root of L into L plus 1. So we have found angular momentum जो है in terms of L. L are the eigenvalues of those eigenstates, ठीक है, which were acted upon by those operators. So only condition is that हमने जो यहाँ पर ये है ना, assume that this is equal to this. Kinetic or orbital kinetic energy should be equivalent to this thing. So if you assume this thing, you can arrive at the angular momentum of in terms of these L eigenvalues. ठीक है? Where L can have value 0, 1, 2, so on. So initially previously हम L को प्लस वैल्यू भी दे देते,
माइनस वैल्यू भी दे देते, सो वी कैन डू इट दैट सेम वे. सो अगर हम इसको इफ यू वांट टू स्पेसिफाई इट दैट L like total energy angular moment is both conserved and quantized such that H का वैल्यू हम लेंगे H by 2 pi, ये कुछ आता है हमारे पास 1.054 × 10⁻34 joules per second. So now we are going to calculate the exact values of quantum mechanics. इस तरह हम क्लासिकल मैकेनिक्स में अब तक थ्योरी करते आ रहे हैं. एग्जैक्ट वैल्यू मीन्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कितना आ रहा है. इट विल कम आउट टू बी लाइक दिस. सो अगर हम इसको प्लैनेटरी मोशन के हिसाब से करेंगे, प्लैनेटरी मोशन मीन्स जैसे न्यूक्लियस में अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इट्स एज द सेम एज इफ अर्थ इज मूविंग अराउंड सन. ठीक है, उसके भी ये एंगुलर मोमेंटम वैल्यूज आएंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएंगे, बट देयर वी डोंट हैव एच. ठीक है, इट्स मीडिएटेड बाय एच. अब क्योंकि एच इतना स्मॉल है, वी कैन से सो इफ वी ट्राई टू सी इट इन टर्म्स ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 2 है तो उसका ये आएगा 2 × 2 + 1 दैट्स 6h. ये देखो कितना कम आएगा, 2.6 × 10⁻34 जूल पर सेकंड. ये -34 है ना, बहुत कम. 10⁻, कितना कम है ना. यस, दैट्स इट. बाय कंट्रास्ट अगर अर्थ का देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ ये इतना आता है 2 × 7 10⁻40 joules per second. You can compare the two. इलेक्ट्रॉन का और इट्स 2, ये 10⁻40 है, ये 10⁻34 है ना, 0.000. अब ये है कि we can have designation of this angular momentum. Designation in the sense that जिस तरह आप करते आए हैं earlier classes, S, P, D, F है ना. तो एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स जो है L, इट विल बी 0, 1, 2, 3 so on and so forth. So 0 का S आएगा, इसका P आएगा, इसका D आएगा, इसका F आएगा. ठीक है, so on and so forth. So you can have अगर इसका ऐसे डालेंगे ना इन द स्पेक्ट्रम, तो L = 0 रखेंगे, L = 1 रखेंगे, L = 2 रखेंगे, तो N = 1 में क्या आएगा, ये 1s आएगा 0. N = 2 में क्या आएगा, 2s 2p. ठीक है, इसमें क्या आएगा, L = 3 में, शाबाश, 3s 3p 3d है ना. For L = 3, it will have 3s 3p 3d 3f so on and so forth. That's it. So the point is कि in the simplest cases अभी हमने इसके माइनस वैल्यूज नहीं लेंगे. So for minus values we can have magnetic क्वांटम नंबर. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो गया, जिस तरह आप अगर हम इसकी मुशाहबत, और वी कैन हैव सिमिलैरिटी विद व्हाट, एंड मैग्नेट की तरह इलेक्ट्रॉन जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है ना, इट्स एज इफ इट बिहेव्स एज ए मैग्नेट आल्सो है ना. अपने एक ग्रिफ्ट में एक प्रॉब्लम है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए रोटेटिंग चार्ज स्फीयर एट ए गिवन पॉइंट. आप जाना यहाँ से देखकर ग्रिफ्ट पे जाना. सो यू ट्रीट ए चार्ज इन मोशन, अब वो लीनियर मोशन है या रोटेशनल मोशन है. और रोटेशनल मोशन स्टिल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, होगा कि नहीं. सो इट्स स्पिनिंग अराउंड, इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन सेल्फ. इन द प्रोसेस इट्स क्रिएटिंग फील्ड. या अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे, हमको कैसे पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड. इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसकी ओरिएंटेशन सेम नहीं रहेगी, इधर उधर जाएगी. फील्ड की एक डायरेक्शन होगी, इट विल रिएक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अब ये है कि द क्वेश्चन इज कि हाउ कैन क्वांटिफाई दिस थिंग, मैग्नेटिक फील्ड कितना चेंज हुआ, कहाँ से चेंज हुआ, क्या हुआ. ठीक है,
सो दैट्स द पॉइंट। एंड जो हमारा जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल है उसके हिसाब से जिस तरह हम क्लासिकली करते थे ना, क्लासिकल मैग्नेटिक फील्ड। सो हाउ इफ यू टेक नाउ इट एज ए क्वांटम पार्टिकल, ठीक है, क्वांटम पार्टिकल की दीज आइगन वैल्यूज और आइगन स्टेट्स ये वैल्यू पाते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट्स गोइंग टू टेक इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड, इन द presence of field. So, and we have to be also conscious of the fact that space is quantized. There's something called space quantization. Space quantization मतलब क्या हो गया? Space quantization means शाबाश। Space quantization means earlier electron can take कोई भी क्लासिकल पार्टिकल कोई भी ट्रेजेक्टरी ले सकता है, ठीक है, बट स्पेस क्वांटाइजेशन मींस दीज मैग्नेटिक फील्ड दे विल ओनली टेक दीज वैल्यूज मल्टीप्लाइड विद एच आइगन स्टेट्स, या इनकी जो आइगन वैल्यूज हैं दे आर मल्टीप्लाइड विद एच सम डिस्क्रीट वैल्यूज। जब आइगन वैल्यूज है ना, आइगन वैल्यूज में जो ऑपरेटर्स एक्टिंग ऑन आइगन स्टेट्स दे विल यू आइगन वैल्यूज, वो डिस्क्रीट भी आ सकते हैं, कंटिन्यूअस भी आ सकते हैं। अब डिस्क्रीट आइगन वैल्यूज ड्यू टू दिस आइडिया ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन। तो स्पेस क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? शाबाश। स्पेस क्वांटाइजेशन मींस दैट एज जो हमारे पास है इट विल हैव दीज वैल्यूज एम एच एम। अब वैल्यू है ना एम, अब स्पेस में जिस तरह आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल है ना, इफ द फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन ऊपर होगा, अगर उस होगा तो ओरिएंटेशन नीचे होगी। सो यू कैन हैव बोथ दीज वैल्यूज, एम एल कैन बी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन है प्लस माइनस एल, सच दैट फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास वैल्यू है ना 2l प्लस 1, सो अगर हमारे पास सो इट विल गो फ्रॉम प्लस एल 0 माइनस एल, 2l प्लस 2l माइनस 2l, है ना, प्लस 3l माइनस 3l, यहां से भी यहां से भी, ठीक है। तो सो अकॉर्डिंगली सो अगर L और H में होंगे, इफ यू हैव रिलेशन L एंड H में, so it will be H 0 minus H minus 2H so on है, यहाँ से H 2H so on है so forth। अब इसमें एक चीज आता है, so and if you want to find it ऐसे graphically, if you want to find it ऐसे, so ऐसे ये 0 है, ये ऐसे है, so you can have this quadrant, this can be quadrant, this can be minus and this can be, yeah, this can be plus or this can be minus, depends। So you can have ml is equal to 2, ml is equal to 1, ml is equal to 0, तो ये accordingly ml is equal to minus 1, ml is equal to minus 2, l is equal to l into l plus 1 into h, ये आ गया माइनस 2h माइनस h h 2h what this is। so these are different orientations, ऐसे orientations along this thing। अब इसमें है something called uncertainty principle and space quantization। Space quantization क्या होगा? So it will not take any value, it will take value, discrete value, and the value is given by taken by this thing h। So if it will have both positive orientation as well as negative orientation, ठीक है। अब इसका मतलब अब क्वेश्चन है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमको कहता है इन दो क्लासिकली जब एंगुलर मोमेंटम था हमारे पास जैसे एक्स वाई माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू जेड डायरेक्शन में होता है ना, एंगुलर उसका जो रिजल्टेंट
इन द, अगर z डायरेक्शन में होगा एंगुलर मोमेंटम तो इट विल बी एग्जिस्ट इन द एक्स वाई प्लेन, अगर ऐसे होगा तो मोशन ऐसे होगी, ठीक है, इस तरह फ्लेमिंग्स लॉ। अब क्वेश्चन ये है कि इवन दो द वैल्यूज आर डिस्क्रीट, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमको कहता है कि हमको एग्जैक्टली विल नॉट लाई इन द सेम प्लेन, बिकॉज हमारे पास जो है ना जो पोजिशन मोमेंटम है पी एक्स वाई माइनस वाई पी माइनस एक्स पी वाई इसको एच पी जेड कुछ ऐसा है ना। सो इसका मतलब ये है कि इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट सम क्वांटिटी इन एक डायरेक्शन, ठीक है, इसका कंपोनेंट होगा, रिजल्टेंट होगा उस डायरेक्शन में, ठीक है, बट यू कैन नॉट एग्जैक्टली डिटरमाइन इट, यू कैन नॉट। जो स्पेस में हमको पता होगा, अगर स्पेस में इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, उसके स्पिन जो वैल्यूज होंगे ना मैग्नेटिक वैल्यूज, दे मे बी दिस और दिस, ठीक है, बट वी कैन नॉट एग्जैक्टली इसको हम जीरो नहीं कर सकते इन दैट एग्जैक्ट इन द क्लासिकल सेंस, इवन दो द कंपोनेंट्स में बी इन द, हम सिर्फ ओरिएंटेशन बता सकते हैं, अगर एक्स वाई हो तो जेड में होगा, मगर जेड में भी एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं बिकॉज दे आर बाउंड बाय द अनसर्टेनिटी रिलेशनशिप, ठीक है, मतलब इफ यू वांट टू नो एग्जैक्ट पोजीशन द मोमेंटम इज नॉट एग्जैक्टली डिटरमाइंड, क्योंकि मोमेंटम जो एंगुलर मोमेंटम है ना इसकी डेफिनेशन कैसे डिफाइन करते हैं, एम पी आर है ना, पी आर है ना मोमेंटम, तो this R is also, these are canonically conjugate values. You cannot simultaneously determine the things exactly. If you determine position, you cannot determine moment. Determine both कर सकते हैं, exactly नहीं determine, the exact precision नहीं determine कर सकते. So even though you can find the magnetic field जो है इसकी quantized space magnetic quantum number के quantized value in other space, which orientation they are going to take, but not in that exact sense. So in that context you can study uncertainty principle. अब इसमें ये है कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दिस इज अनदर आइडिया। हाँ, स्पेस क्वांटाइजेशन होगा, ये तो छोटा है, इट्स नॉट, it's an idea and don't see it as a syllabus, वो आएगा। idea is quantized, मतलब you cannot take any value, जैसे मकान है ना, it's if you want to say what are the ultimate constituents of मकान, इस रूम किसका पता है, इसके बेसिक्स क्या है, ब्रिक्स से बना है ना, ब्रिक के नीचे कोई चीज नहीं है, ठीक है, it's not made of smaller bricks, brick is some discrete quantity. So in the same way, the quantity, the quantized space is quantized. It will not take every possible value. It will take those values, this L into L plus 1 multiplied with H in space. यही हो गया space quantization. अब हमारे पास है इलेक्ट्रॉन probability density. इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मीन्स, जैसे हमारे पास था ना ये रेडियस कैसे निकालते थे, एन स्क्वायर ए नॉट बेसिकली था हमारे पास 13.6 है ना, फिर वो एन इज इक्वल टू 1, फिर एन इज इक्वल टू 2 3 जो भी हम निकालते थे इन योर अर्लियर क्लासेस। नाउ हमारे पास जो अभी है बोहर मॉडल, तो उसमें जो क्वांटम जो एक्चुअली बोहर मॉडल को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है, ठीक है, व्हेन वी सॉल्व दिस श्रोडिंगर इक्वेशन, तो हम क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हिच इज बेसिकली बोहर मॉडल बट सम modified assumptions, so we will say there are no definite values of or theta and phi. जो श्रोडिंगर इक्वेशन हमने की थी ना इन टर्म्स ऑफ और थीटा एंड फाई, वो सॉल्व की थी, एंड देन वी कंसंट्रेटेड ऑन समथिंग पर्टिकुलर पैरामीटर।
सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो हमारे पास है, इट विल बी साई स्क्वायर, एंड साई स्क्वायर का अगर डिपेंडेंस है और थीटा एंड फाई, सो इट विल बी आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर एंड फाई स्क्वायर। अब ये है ना इंडिविजुअली आर एंड आर स्टार, फाई एंड फाई स्टार, साइन। So individually, so in the value of wave function psi is psi square जो है ये real है, but individually psi का क्या है? Psi is a complex. In the same way R can be complex. That's why R star is R square. Phi star is, ठीक है? So this is the probability. So if you want to find it in terms of phi, for example, azimuthal wave हम लेंगे, तो phi को हम ऐसे denote कर सकते हैं। Then phi star will be shower. It will be a square, basically e to the power iota m phi. एक तो phi आएगा, phi star आएगा, ये complex conjugate में माइनस आएगा। So ये e to the power 0 आएगा, so it's 0. So the likelihood of finding the electron at a particular azimuthal angle phi is constant. That doesn't depend upon phi at all. अब इसमें अगर हम what is the this is the simplest way. अब हम for example probability of finding. So before we are going to find the जिस तरह हम यहाँ पर लाए ना ये, we can also write it. Before how we can find the probability of this thing, we can also see it like this. Radius r, and for 1s it will be this. So you need one second before coming to it. So we'll have another thing, something called probability of finding an electron. Probability of finding an electron. In some real, तो कैसे निकालेंगे? अगर हम वॉल्यूम एलिमेंट है, वॉल्यूम एलिमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? dV is equal to, because here r is dependent upon r, theta and phi. एक azimuthal एंगल है, एक तो जैसे स्फीयर है ना, एक ऐसे है रोटेट, एक ये कोऑर्डिनेट, और एक r इज फिक्स्ड स्फीयर में, है ना। अगर स्फीयर को आपको फॉर्म करना है, एक है कि ऐसे जो उसका ऐसे करेंगे, एक है इसका ये रेडियस विटिस, एक यहां से यहां तक जाएगा, एक तो वन गोज फ्रॉम 0 to 2 पाई, दूसरा यहां से 0 to पाई. सो यू शुड हैव azimuthal angle and other. So the volume elements है ना, it will be dr or d theta, which might have done, or sin theta d phi, or it will be r square sin theta dr d theta d phi. अब जो प्रोबेबिलिटी है, so phi and theta and phi are normalized functions, and probability of finding an electron will be between radius r and r plus dr. तो probability जो हमारे पास होगी, so it will be r square dr 0 to pi, ये है पाई स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा. देखो ये r स्क्वायर एक चेंज नहीं होता है, दूसरा फाई चेंज हो जाएगा, एंड दिस 0 to pi पाई स्क्वायर डी फाई. So एक हो जाएगा चेंज फ्रॉम 0 to pi, the other is from 0 to 2 pi.
So if you just इसका आप निकालोगे, it will be more or less r square dr. अब इसको हम अगर if you want to see it in terms of nucleus, so and in terms of how it will pan out, so it will pan out like this. इसका solution नीचे हम रेडियस करेंगे, रेडियस है हमारा ये वाला ए नोट, ठीक है, एन स्क्वायर इज 1 2 3 जो भी है, तो इसको हम फॉर एग्जांपल अगर ए नोट है, ये 5 ए नोट है फॉर एग्जांपल, फिर 10 ए नोट, 15 ए नोट, 20 ए नोट, सो वी कैन हैव द स्केल, एंड यहां से राइट हैंड साइड से पी आर डी आर जो है इट्स लाइक दिस, is equal to r square n square dr. So we are going to plot पहले का 1s स्टेट ऐसे आएगा, फिर 2s आएगा ऐसे, 3s आएगा ऐसे, ठीक है, इसी तरह 2p आएगा ऐसे, 2p आएगा ऐसे, ठीक है। तो 1s में हमारे पास एक ऐसे आएगा रेडियल वेव, 2s हमारे पास आएगा ये, 2s will come like yes, 2s will come like this, 3s will come like 1 2, 3s will come like this, अब यह है कि हाउ कैन फाइंड द इन वैल्यूज को डालते हुए राइट हैंड साइड में विजा वी रेडियस, अगर रेडियस का हम इन टर्म्स ऑफ ए नॉट 5 ए नॉट इज अ स्केल, मिनिमम इज ए नॉट इज कोई और 1 के लिए, तो उसके हिसाब से व्हाट आर द 1 जो हमने वहां से किया था ना, फॉर एस पी डी एफ एल इंटू एल प्लस 1 है ना, तो क्या निकला था पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, तो पहले में आएगा एस इज इक्वल टू 0, दूसरे में आएगा एस एंड पी, तीसरे में आएगा एस पी डी, चौथे में आएगा एस पी डी एफ एस, सो इट विल हैव ऑल द लेवल्स, पहले में एक ही लेवल आएगा, दूसरे में आएगा दिस लेवल प्लस दिस लेवल, तीसरे में आएगा एस पी डी भी आएगा, फिर एफ डी आएगा, and we are going to increase, so and it might have some distance or or not या a not हमारे पास न्यूक्लियस में जो भी। अब इसमें ये है कि एग्जाम्पल 6.2 which I'll just encourage you, आप इसको खुद से देखो या you try to attempt it। ये कह रहा है कि example 6.2, verify that the average value of 1 by r for 1s electron in the hydrogen atom is 1 by e naught। ये verify करना है, value of 1 by r for 1s electron is, 1s electron की radius जो है 1 by, just so here the book has done it, you at least have a, इसको आप देखो, at least पढ़ो आप, ठीक है, and just see whatever I have done, ठीक है, stop, चलो ठीक।